Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am here with my third lecture for class 4th and the subject is Social Studies. Unit number 1, chapter number 5 and the topic is Weather Facts. As you know students, in our last lecture we learned about weather and about those factors that affect on weather. Today we have some questions and their answers. Question number 1 is, what is weather? मौसम क्या होता है? And the answer is, weather is a condition of atmosphere in a place for a short period of time. मौसम एक जगह में मौजूद फ़िज़ा की वो हालत है जो थोड़े वक्त के लिए होती है. And the question number 2 is, define atmospheric pressure. फ़िज़ाई दबाव की वजाहत करें. And the answer is, the pressure of the air above an area is called atmospheric pressure. एक इलाके के ऊपर हवा के दबाव को फ़िज़ाई दबाव कहते हैं. Question number 3 is, what are satellites? Satellites क्या होते हैं? And the answer is, satellites record the weather and transmit the information back to Earth. Satellites मौसम रिकॉर्ड करते हैं और मालूमात वापस ज़मीन पर मुंतकिल कर देते हैं. Question number 4 is, write name of 5 instruments that are used to record the weather. उन 5 आलात के नाम बताएं जो मौसम रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. And the answer is satellites. As we learned in our previous lecture students, satellites are used to record the weather. Number 2, barometer. Barometers are used to measure the air pressure. Number 3, hygrometer. Hygrometer measures the humidity in the atmosphere. Number 4, thermometer. Thermometers are used to measure the temperature in a particular place or area. And 5th instrument is wind vane. Wind vane identifies the direction in which the wind is blowing. Question number 5, what are geostationary satellites? जोग्राफियाई मसनूई सियारा क्या होता है? And the answer is, geostationary satellites are situated in one place and transmit data back to Earth at regular intervals. जोग्राफियाई मसनूई सियारा, जिसे हम ऑर्बिट सैटेलाइट्स भी कहते हैं, एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो ज़मीन के साथ गर्दिश करता है और एक जगह पर साकन मालूम होता है और ये मरहलेवार अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी मालूमात को वक्फे वक्फे से ज़मीन तक पहुंचाता रहता है. Now students, we have some true false. First is, walnuts and cherries cannot grow in places having warm weather. अखरोट और चेरीज गर्म मौसम की जगहों में नहीं उगाए जा सकते. Walnuts and cherries cannot grow in places having warm weather. And this is true. Second is, igloos are built with block of ice. इग्लू गुंबद नमा घर होते हैं जो बर्फानी इलाकों में बर्फ़ के बड़े टुकड़ों से बनाए जाते हैं. Igloos are built with block of ice and this is true. And the third is, temperature stay the same. दर्जा हरारत एक जैसा रहता है? No students, दर्जा हरारत एक जैसा नहीं रहता. This is false. And fourth is, a rising barometer means sunny and dry weather. बैरोमीटर में इजाफा हो जाए तो उसका मतलब है गर्म और खुश्क मौसम. A rising barometer means sunny and dry weather and this is also true. Number 5 is, high pressure system usually lead to fair and calm weather. हाई प्रेशर का निज़ाम आम तौर पर अच्छे और पुरसकून मौसम का बायस बनता है. High pressure system usually lead to fair and calm weather and this is also true. And today's diary is, learn this work and write in your binders. And the message is, the beautiful thing about learning is that no one can take it away from you.